ॐ ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। परब्रह्मणे श्रुतिमात्रे समस्त ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्या आचार्येभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो देवताभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वशिष्ठ विश्वामित्राभ्यां नमः। ओम श्री वाल्मीकि तुलसीदासाभ्यां नमः। ओम श्री वेदव्यास महर्षि नमः। श्री रामचंद्र स्वामिनः भक्तेभ्यो श्री रामायण शास्त्राणाम् आचार्येभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। तेषां सर्वेषां कृपानुग्रहेण उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्यबोध पुराणे इतिहासोक्त भगवद्भागवत दर्शन अनुभव सनातन धर्म से विश्वव्याप्ति विश्व आध्यात्मिक प्रगति विश्व शांति कल्याण एकता प्राप्ति अस्मिन् कर्मणि निश्चित अस्माकं सह सर्वेषां भक्त साधक आचार्य गुरूणां पूर्ण आयुरारोग्य ऐश्वर्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजयादि सत् संपदा शक्ति सानुकूल्यता शक्तीनां प्राप्ति बाह्य अभ्यंतर शत्रु विघ्न निर्मूलन द्वारा धर्म संस्थापन कार्ये दिग्विजयार्थम श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रस्य पारायणम् अध्ययनं बाला मातुः सहस्रनामावल्याः पारायणं देवी स्तोत्राणां पारायणं वयं सर्वे करिष्यामहे। आदौ श्रीरामनाम संकीर्तनम्। ओम श्रीराम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। अथ श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रम् उत्तरकाण्डं पंचम सर्गः श्रीराम गीता श्री महादेव उवाच श्रीराम उवाच। फ्रेंड्स चैंट फ्रॉम 47 ऑनवर्ड्स हो गया, 46 47 हो गया, 48 49 50 51 52 5 श्लोकास। पूर्वं समाधेः अखिलं विचिन्तयेत् ओंकारमात्रं सचराचरं जगतु तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचकः विभाव्यते ज्ञानवशात् न बोधतः अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वकः युकारकस्तैजस ईर्यते क्रमात् प्राज्ञोमकारः परिपठ्यते अखिलैः समाधिपूर्वं न तु तत्त्वतः भवेत् विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापयेत् उकार मध्ये बहुधा व्यवस्थितं ततो मकारे प्रविलाप्य तैजसं द्वितीयवर्णं प्रणवस्य चान्तिमे मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे
विलापयेत् प्राज्ञमपीह कारणम् सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिमत् विज्ञानदृक् मुक्त उपादितो अमलः एवं सदा जात परात्म भावनः स्व आनन्दतुष्टः परिविस्मृताखिलः आस्ते स नित्यात्म सुखप्रकाशकः साक्षात् विमुक्तो अचलवारि सिन्धुवत्. Respected friends, this entire Adhyatma Ramayana for a serious, sincere, genuine Shrota Adhyatmika Sadhaka contains and gives every of the knowledge sadhana to be done to reach to Paramatma Anubhuti. In all those topics, everyone cannot be compared कि ये बढ़िया है नहीं है. All are great. Yet for our reference and study sake कहीं ना कहीं टिकना है. So the first sarga of Balakanda, Rama Hrudayam. And then fifth sarga of this Uttarakanda, Sri Rama Gita. These two can be kept in mind for thorough study, investigation, understanding, acceptance, sadhana, because they contain everything. है ना? Tattva Jignasa is Purta by telling us Tattva Jnana. Then Sadhaka Lakshanas, they are given. The sadhana that is told, Vigna, how to conquer their prerana required given, Utsaha required given. So in this way, foolproof complete are these two topics for Adhyatmika Sadhaka. And then we with disturbed, distracted mind, having 99% interest in the world, 1% just like that for spirituality, with half-hearted mind, intellect, as a speaker when I speak and you listener, then total justice we are not doing. Therefore, total grasp, inspiration may not be coming to us. Nevertheless, we have started. We are tasting it. Little more attentiveness, Shraddha, unbiased. If you show, the glory of this topic is understood. Our respect for it grows. When the respect grows, then we should take initiative to practice the things also. Adhyatma Ramayana's teachings are like mother has mixed the rice dal and putting in the mouth. But आपको चबाकर वो निगलना है बस. Isn't it? That way, all the Rishi Munis in this entire Ramayana, through them Bhagavan Vyasa of course, has made topics easily consumable, digestible. Not like Upanishads, same Jnanam, but there it is tough. You must study them through Adi Shankara Bhashya. And for my feeling, belief, and maybe you can also to some extent agree, that the simplicity in Shankara's Bhashya to make us understand all the Tattva Jnana and Shastras is because two reasons. One, Vyasa Bhagavan has blessed him. Second is he has gone through Adhyatma Ramayana. I think he has really mastered it. It helped him a lot in giving all those Prakarana Granthas. मैं वो भी पढ़ता हूँ तो पक्का पता चलता है कि इसमें उसमें एक ही चीज है. सुलभता सुगमता in Adi Shankara's writings are because of the help from the Adhyatma Ramayana. I believe you need not. Now, last 2-3 days, we were seeing the Adhyasa, then Adhyasaka Apavada. Then, like in yoga here also, by rejecting all Anatma, establishment Atma in Atma is mentioned as Moksha. Obviously, a question should come. What are the Lakshanas of the Atma? Then in 2 shlokas, Swarupa and Tatastha Lakshana of Atma are told, which are indicators for us to tune ourselves to through Anvaya Sadhana and reject anything other than it called as Vyatireka. How to do that? Using these definitions of Paramatma given for our sadhana. See, in those 2 shlokas, Bhagavan taught us. We have spent sufficient time, we have studied sufficiently exhaustively. You know, that na viviktaha asinaha uparata indriyaha vinijita atma vibalantarashayaha. Then vibhavayed ekam ananya sadhanaha vijnanadruk kevala atma samstitaha. Every step discussed. While doing so, continuously traveling Vishwam, what is to be done with it? It is said,
The Sarva Karana of the Vishwa is Parabrahma only. So, merge this Vishwa in the Paramatma and you reach and establish in Purna Chidanandamaya Atma. Anumati. Once you reach it, you and you alone are there. There is nothing other than you, which we consider as insiders and outsiders. Nor we are limited by anything to be considered as we are inside something or outside something. तो बाह्य अभ्यंतर आदि कोई भी विशेषण रहित एकमेवाद्वयम ब्रह्म अनुभूति is gained. All is good, but merging the Jagat scene in Paramatma looks to be little tough to understand. That is why Adi Shankara or Vyasa Bhagavan understood it. Then he took now the help of Mandukya Upanishad. And in the next 5 shlokas, he is giving us Omkara Pranava Upasana. Clear? Omkara Upasana, Pranava Upasana. अभी बता रहे शुरू में what is Pranava Upasana finally is in Pranava Upasana 3 things happen. 1. All Sthula Sukshma Karana Vyashti and Samashti. Okay, gross, subtle, causal, individual, total is merged in Om. First step in Pranava Upasana. Second, having consumed in itself everything, the Om itself disappears. Second thing in Pranava Upasana. Once it disappears, then what remains is pure Parabrahma Anubhuti. Every upasana, like Om Namo Narayana, that Om Namo Narayana upasana consumes all other thoughts. Om Namo Narayana also gets dissolved when we watch from where this Om Namo Narayana coming and going, on whose support it is there. In the drishti of ours, here the Om Namo Narayana goes away, there the Parabrahma, the reality reveals to us. So पहले थोड़ा बताने से एक idea आ जाएगा. Then the process that is to be done is given here, which is given in exhaustive details in the Mandukya Upanishad with Gaudapada's Karikas as well as Adi Shankara's Bhashya. But in that also among 4 prakaranas, in the Agama prakarana only, Pranava Sambandhi, everything is dealt. Vaitatya and Advaita and Alata Shantar Prakaranas are to reveal truth only, but they don't contain anything regarding Om. They are all given by the Karikakara, Gaudapada, Bhashya given by Adi Shankara. In one of the language, Telugu, we just started 10 days back. Study of Mandukya. In English, we have done it. You can listen. They are available. So, whole Mandukya Upanishads, Prakarana Granthas, Pranava Upasana to reach Brahman is taught to us by Lord in Pancha Shloka only. Pancha Shloki Pranava Upasana, you can talk it as. Pancha Che, to Shat Shloki, Pancha Shloki. We'll try to see it also equally simply. क्योंकि ऐसे चीज ना सुन समझने में इजी सिंपल होते, बट फल सिर्फ जानने से नहीं होता, साधना करना होता है. आप साधना करो ना करो, इंटेंसली करो, लाइटली करो, पोस्टपोन करो, दैट इज एवरीबॉडीज सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है ना. गुरुज आर लाइक डॉक्टर्स, दे चेक, दे सी द डायग्नोसिस करेंगे, दे गिव प्रेस्क्रिप्शन. अब मेडिसिन लो या ना लो, मैं क्या करूं? इफ यू डोंट टेक यू विल सफर, इफ यू टेक यू आर हेल्दी. तो गुरु कॉल्स डिसेबल, गिव्स ऑल ज्ञानम साधना. करो तो तरोगे, नहीं करो तो मरोगे. व्हाट कैन आई डू? But as anyone sincere sadhaka, Shishya receives all these inputs, then he is on that continuously sadhana path. Okay. Now, step by step and not at all difficult, very easy to understand. Come to the verse number 46. What is starting? I am not talking anything 45, 44 जो 3-4 बार कर चुके हैं हम, वो फिर आपके लिए हमने छोड़ दी. Listen to the earlier class. Straight away entering into 48. कहते हैं पूर्वम समाधेः. पूर्वम समाधेः, before experiencing the Paramatma Vastu.
समाधि मीन्स धी परमात्मा अनुभव में समा गया. धी is chitta. Chitta comes from three gunas. Three gunas come from Maya. Maya is Paramatma's inseparable Shakti. It is unmanifest when the world is not created. Bhagavan, when it gives chabi, it manifests and does all this drama. Okay? Dhika samatva is moksha sthiti. Purvam. Before achieving that, before trying to achieve that, and without doing the things which are told, you can't achieve it. What is that? Purvam samadhehe akhilam vichintayet onkara matram. Sacharacharam jagat. Okay? Sacharacharam jagat akhilam onkara matram iti vichintayet. Sacharacharam jagat. Akhilam jagat. Be careful. Huh? So, Sacharacharam jagat, chara achara. In that, when it word akhilam is used, you can say jada chetana. So, in fact, by saying this, what is the entire universe constitutes of is given here. What is the Srishti? Srishti is nothing but Jada, Chetana, Chara, Achara. Other than this, there is nothing called Srishti. Again, Jada, Chetana, Chara, Achara. So, Jada में Chara क्या है? The winds and the rivers. These are all Jada but Chara. They move. जड़ में अचर क्या है? द माउंटेन्स है ना, द भूमि हर सेल्फ. इफ यू डोंट सी द अधिष्ठान देवता माता, दे आर कॉल्ड जड़ अचेतन. चेतन एंड अचेतन जड़ में. चेतन में चर, सॉरी, जड़ में चर अचर. चेतन में चर अचर में, चेतन में चर क्या है? मनुष्य पशु पक्षी. चेतन में अचर क्या है? वनस्पति. होल वर्ल्ड इज दिस ओनली. नो, पूरा यूनिवर्स में ही है. So all this characharam, jada chetanam, akhilam, if you aim to establish yourself in the self by transcending the chitta, what you have to do is this charachara jada chetana akhilam jagat, what is to be done? Ki vichintayeta, should be contemplated as that all this is as onkara matram. Now, how everything is Onkara Matra is in Mandukya in the Agama Prakarana. Our Manduka Rishi and Karika Kara have given us very exhaustive. Ab usko aap padho. Very beautifully that is explained. Okay. Okay. I will tell you in 5 minutes max. How that topic developed there is, take one sample of anything. It has two things. Na? One is Rupa, another is Nama. Clear? Now hold on to the Rupa. Go into its cause. When you go to the cause hunting of any Rupa, where you reach ultimately, it has come from the earth. Then go further. Where from earth came water? So that way, where water from Agni? Agni from Vayu, Vayu from Akasha. Akasha came from where? Pure Sat Swarupa Paramatma only. Therefore, every Rupa with millions of its own variety in their own essential Karana are nothing but a Sat Paramatma only. This is the inquiry done. Like every pot in the world, when you go into its Mula Karana, you end up in the mud only. Every ornament. एंड मूल कारण गोल्ड ही होता है. तो सब रूप जो है एक ही सत वस्तु के अनेक रूप है. So therefore, all the rupas are dissolved in the sat. Yeah. Now that sat alone, be attentive, is indicated or named as Om. Therefore, what is Om? Om is Parabrahma. What is entire Jagat of Rupa? Nothing but Sadvastu, which is Parabrahma. Therefore, every Rupa that way is Omkara only. Because Om is Parabrahma, Parabrahma is Sadvastu, Sat alone is the ultimate Karana in everything without which none of the Rupa exist. Rupa sorted out.
Another way also is Rupa sorted out. You know why? How? Ki, they say there is no Rupa. What is there is Nama only. How? Because without naming something, even if you do see something, you cannot explain or talk about it. A vichitra logic hai ye. Like a boy is there next to you and your friend is there. You are seeing that boy. You ask him, hey, लड़का कौन है? अब दिख रहा है ना आदमी. Why do you ask? Why you are not satisfied? Only when he says, अच्छा ये मेरा बेटा है. The moment the Nama told that is my son, then only you will recognize that Rupa. एक तरह का विचार शास्त्रीय विचारण क्या है कि बिना नाम का रूप नहीं रहता. देखो रूप नामक कोई चीज है ही नहीं, जो है वो नाम ही है. This another way of merging the rupa in the nama. The other thing is all rupa basically come from Sat. Sat is Brahman. Brahman is named as Om. Therefore, every rupa is Om. Safe. Now take the nama. Every nama are what? Padas, words only, no? Every pada or words are nothing but what? Aksharas only. Amma. Every akshara is nothing but sound only. And what are the sound? The whole universal, every language in the universe, even that of birds, animals also, have only three sounds. The beginning of sound, the modification of sound, ending of the sound. है ना, कोई कोयल शुरू करता है कू करके, it starts, it just maintains for some time, then it concludes that sound. है ना, roaring of the lion, any of the animal, any bird, any Chinese, Japanese, कोई भी language दुनिया में, starting of sound, modification inside, end of the sound. In that only all languages, all vyakaranas, all words, all aksharas, all sentences, everything is nothing but shabda and these three only. This beginning of the shabda is called as then millions of modifications of the shabda is called oh. Then without the conclusion, you can never conclude the word. Therefore, basically, any word in the whole universe of which you give meaning later on for transaction, communication purpose has to come from a and u and ma. Put together is Om, Amatra, Umatra, Mamatra. So, see, you have to think these things once, twice, 10 times, then the clarity comes. So, therefore, in this world, everything having Rupa Nama is nothing but Omkara only. With this knowledge behind, do the Upasana. Or what? The whole world is nothing but Pranava. Like when you see an album of your friend, so many photos you see, but you know that this stupid fellow is this fellow only. Your own friend or your own son. कभी का अपने खुद का देखकर ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, है ना? एवरीथिंग हैप्पी हो ये भी आप है, इतना गंदा दिख रहा है, मेरा नेचुरल फोटो है, ये भी मैं हूँ. वहाँ तो बंदर की तरह खड़े थे. नहीं वो बंदर ही था, वो साइड पे मैं खड़ा हूँ ना वो मैं. So it is he only, all the album. Same way, अरे यार any नाम रूपा ट्रांजैक्शन के लिए जो करना है करो, बट हार्ट इन हार्ट प्लीज नो दैट इट इज ओम, इट इज ओंकारा. उपासना हो गया पूरा जगत का. How simple it is if you know it and do it. Remember, we are the sadhakas to know the truth reality which alone gives us moksha. That will be happening on the meditation. In meditation, what disturbs our thoughts? Thoughts are containing whole object of world, gross, subtle, cause, or individual, total. Somehow, if you can understand logically and merge all of these things in one, and that उसको भी फेंको. like घर का सारा कचरा इकट्ठा करके एक बैग में डाल के पॉलिथीन कहीं पड़ोसी के घर डालते हो कि नहीं आप, उसमें भी वही काम. You go and throw it. Don't we do it every day? So to the whole world of multiplicity of name and mama, nothing but Om like नामक पॉलिथीन में डाल के बस छोड़ो तो घर साफ सुथरा. In the same way, the sadhana and करने से आपको आइडिया आएगा. The Om of Vedic period only later on in Puranic period is named as Rama or Krishna or Shiva.
तो सारा जगत राम में है, राम में सब जगत को बधाई करो, इसलिए दाल राम, रोटी राम, सब्जी राम। दे तो रहे खाना, बट सब राम रूप है। एवरीथिंग राम, साइकिल राम, स्कूटर राम, कार राम, एरोप्लेन राम, हरे राम। है ना, नदी राम, पहाड़ राम, कृष्ण, कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण ही है। देखो 10वां अध्याय में तो 11 में भगवान ने कह भी दिया, अरे महाराज हर एक चीज में मैं हूं और मेरे ही अंदर सब कुछ है, तो मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए we saw in our Lakshmi Stuti how Indraji was telling, you are Swaha, Swadha, Sudha, you are everything. तो यहाँ we are given प्रणव आलम्बना which is in the Vedic language. और राम जी वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशदात्मजे वेदा प्राचे सादासिद रामायणात्मना। तो श्री राम जी को वे ओंकार का उपासना लक्ष्मण स्वामी के लिए देने में कोई संकोच संशय नहीं है। सो बैकग्राउंड इज टोल्ड टू यू, नाउ द उपासना है वो भी सिंपल। हमको 3 अवस्थाएं होते हैं, जागरण स्वप्न सुषुप्ति। इन 3 अवस्थाओं को करस्पॉन्डिंग ओंकार के 3 मात्राओं में मर्ज करना। मतलब इन अवस्थाओं में जो भी अनुभव आ रहे हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी वॉट एवर इज वी आर एक्टिंग, रिजल्ट गेटिंग, ऑल ऑफ दैट इज नथिंग बट दैट मात्रा इन दिस वे डूइंग इज उपासना। सो outside surface level, what is to be done with vyavahara is done. Like a carpenter, when he is working on making a door or window, has he ever forgotten that that is wood? He never forgets that it is wood. Heart in heart, continuous thought is maintained. Then with that you are. So too, we have to heart in heart know that this matra is this avastha, this matra is this avastha, with all contents of that avastha. In this way, practice करने से एक आइडिया आता है। So all 3 avasthas in 3 matras, and 3 matras, the first in second, second is in third, third in a matra, and that is what is Brahman. That is what is we have studied in these 5 shlokas. Okay. So today we have spent time in giving the whole basic of how Shabda Rupa both are nothing but Parabrahma only, and to experience it, variety of Pauranic upasanas are given. Here Ramji is giving Vedic upasana, Omkara Pranava upasana. Now here is the only place where unambiguously in a very spashta rupa it is said twice, so that we don't miss. What is it, you know? ये जो आपको बता रहे हैं merge the whole word in ओंकार है ना, these are all प्रक्रिया only. Never take Om also as reality. No, our Paramatma is reality. 2 places he says here. Okay, Ajnanavashat na bodhataha. Okay, second place where he says in the 49 also, Samadhi Purvam natu tattvataha bhavet. These are all prakriyas, sadhanas to reach out. Having reached other than Brahman, nothing remains. And don't dundo piche, where is my Omkar? Where are my all these Auma Matrae? Isn't it like medicine taken? It removes disease, it also goes away. What remains is health. ओंकार comes, सब लपेट के सब चला जाएगा लेकर वो. What remains is Brahman. अब don't ढूंढो now where is ओंकार. Only this place it has full authority, audacity, clarity to say, I am teaching you upasana only to reach to the samadhi or brahma sthiti. Neither the prakriyas nor the things are real from the ultimate standpoint. But now they are required for reaching there. So we have not explained to you this. As we said in the shlokas, we will do it tomorrow. ओके, बेस तो बन गया है, थोड़ा मन में शांति हो गई। अब कल 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके साथ फिर और 5-6 श्लोक या 2-3 let us do tomorrow. Today we'll stop for all the parayanas we have to do. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो परमर्षिभ्यो परब्रह्मणे श्रुतिमात्रे तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामे विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम भाग्याब्धिचंद्रिका भक्त चित्तकेकिघनाघनारो भरतं भोलिर् मृत्युदार कुठारिकाय नमो नमः। ओम नासैरोगरे सपीराजपतनधनोत वीरां श्री हनुमद्वीराय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। शिवस्मरण। ओम नमः शिवाय। 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 ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मीनारसिंहाय प्रह्लादाय च। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मीनारसिंहाय प्रह्लादाय च। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मीनारसिंहाय प्रह्लादाय च। ओम राम 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 बाला सहस्रनामावली from 201 to 200 to 300. ओम भगगुह्या ओम भगकृतायै नमः। ओम भगगुह्यायै नमः। ओम भगेश्वर्यै नमः। ओम भगदेहायै नमः। ओम भगावासायै नमः। ओम भगोद्भेदायै नमः। ओम भगालसायै नमः। ओम भगविद्यायै नमः। ओम भगक्लिन्नाय नमः। ओम भगलिंगाय नमः। ओम भगद्रवाय नमः। ओम सकलाय नमः। ओम निष्कलाय नमः। ओम काल्ये नमः। ओम कराळ्ये नमः। ओम कलभाषिन्ये नमः। ओम कमलाय नमः। हंसिन्ये नमः। ओम कालाय नमः। ओम गरुडाय नमः। ओम गरुडावत्ये नमः। ओम भासुराय नमः। ओम भैरव्ये नमः। ओम भासाय नमः। ओम भद्रकाळ्ये नमः। ओम कुलांगनाय नमः। ओम रसात्मिकाय नमः। ओम रसावासाय नमः। ओम रसस्यन्दाय नमः। ओम रसावहाय नमः। ओम कामनिष्यन्दिन्ये नमः। ओम काम्याय नमः। ओम कामिन्ये नमः। ओम कामदायिन्ये नमः। ओम विद्याय नमः। ओम विधात्र्यै नमः। ओम विविधाय नमः। ओम विश्वदाय नमः। ओम त्रिविधाय नमः। ओम विधाय नमः। ओम सर्वांगाय नमः। ओम सुंदर्ये नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम लावण्याय नमः। ओम सरितंबुधये नमः। ओम चतुरांगे नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः। ओम चतुराय नमः। ओम चारुहासिन्ये नमः। ओम मंत्राय नमः। मंत्रमये नमः। ओम मात्रे नमः। मणिपुरसमाश्रयाय नमः। मंत्रात्मिकाय नमः। मंत्रमात्रे नमः। मंत्रगम्याय नमः। सुमंत्रकाय नमः। पुष्पबाणाय नमः। पुष्पजैत्र्ये नमः। पुष्पिन्ये नमः। पुष्पवर्धिन्ये नमः। वज्रेश्वर्ये नमः। वज्रहस्ताय नमः। पुराण्ये नमः। पुरवासिन्ये नमः। ताराय नमः। तरुणाकाराय नमः। तरुण्ये नमः। ताररूपिण्ये नमः। इक्षुचापाय नमः। महापाशाय नमः। शुभदाय नमः। प्रियवादिन्ये नमः। सर्वकाय नमः। सर्वजनन्ये नमः। सर्वार्थाय नमः। सर्वपावन्ये नमः। आत्मविद्याय नमः। महाविद्याय नमः। ब्रह्मविद्याय नमः। विवस्वत्ये नमः। शिवेश्वर्ये नमः। शिवाराध्याय नमः। शिवनाथाय नमः। शिवात्मिकाय नमः। आत्मिकाय नमः। ज्ञाननिलयाय नमः। निर्भेदाय नमः। ओम निर्वृत्तिप्रदाय नमः। ओम निर्वाणरूपिण्ये नमः। ओम पूर्णाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम निष्कलाय नमः। ओम प्रभाय नमः। ओम श्रीफलाय नमः। ओम श्रीप्रदाय नमः। ओम शिष्याय नमः। ओम श्रीमय्यै नमः। ओम शिवरूपिण्ये नमः। ओम क्रूराय नमः। ओम कुण्डलिन्ये नमः। ओम श्री बाला त्रिपुरसुन्दरी मात्रे नमः।
That is our book. Hare Rama. Today we do Shri Sankatastuti. That Sankatastuti, which is titled as Sankatastuti here, is nothing but Mahishasura Mardini Stotra. When I was looking at it, क्या है संकटा, वो तो हमारे माता ही है. It has कितने, अरे यार ये खत्म ही नहीं होता. 21 do you think we can do it? 10 करेंगे, शक्ति है तो बाकी. ओम श्री संकटास्तुति. ओम ऐ गिरिनंदिनि नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुर्मुनिरोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब कदम्ब मदम् ऐ जगदम्ब कदम्बवन प्रियवासिनि तोषिणि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगंजिनि महिषविधारिणि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निजहुंकृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित रोषित शोणित बीज समुद्भव बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपाटित मुंड भटाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शौंड मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषंग रणक्षणसंग परिस्फुरदंग नटत्कटके कनकपिशंग पृषत् कनिशंग रसत् वटशृंग हता बटुके हत चतुरंग बल क्षितिरंग घटत् बहुरंग रटत् वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधाद्ध दुर्धर निर्भर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशय दूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवधूत दुरंत गते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरिवधूजन वीरवराभय दायकरे त्रिभुवनमस्तक शूरविरोधि शिरोधि कृतामल शूलकरे दुमि दुमि तामर दुन्दुभिनाद मुहुर्मुखरीकृत दिङ्निखरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाथ तथेयि तथेयि तथा विनयो तरनुत्यरते कृतकुकुथा कुकुथोदिदृढ ताडित्क तालकुतूहलगानरते
धुदुकुट धूधुट धिंदिमित ध्वनि घोर मृदंग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते जय 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 शब्द पर स्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिंझिमि झिंकृतनूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटन नाटिनत नाट्यरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैलसुते ऐ सुमन 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 सुमनोरम कांतियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रभृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराभिधृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महितमहाहवमल्लमतल्लिक वल्लितरल्लितभिल्लिरते विरचितवल्लिक पालिक पल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गभृते श्रुतकृतफुल्लसमुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते 12 हो गए आई कैन डू ऑल द 8 आल्सो कल करेंगे इसको देन संकट नाम अष्टकम ओम शांति 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 टुडे इज धन्वंतरी त्रयोदशी धनतेरस they call so let us pray to धन्वंतरी भगवान for blessing the whole universe with the Ayurveda mantras, Ayurveda jnana, Ayurveda aushadhi, so that nobody is suffering any disease. May He give us the Amrita also, with which we live long life only for spiritual unfoldment. 3 times, which we do every day in the beginning. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः Hmm. 31 to I am chanting up to 35 of 8th chapter of Adhyaya Ashtama Skanda Bhagavat. Bhagavat Mahapurana 8th Skanda 8th chapter slokas from 31 to 35 are Dhanvantari Avatara topic. ओम अथोदधेर्मध्यमानात् काश्यपैरमृतार्थिभिः उदतिष्ठत् महाराज पुरुषः परमाद्भुतः दीर्घपीवरदोर्दण्डः कम्बुग्रीवोरुणे क्षणः श्यामलस्तरुणः स्रग्वी सर्वाभरणभूषितः पीतवासामहोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः स्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितः स वै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांशसम्भवः धन्वन्तरिरिति ख्यातः आयुर्वेददृगिज्यभाक् धन्वन्तरिरिति ख्यातः आयुर्वेददृग् इज्यभाक् बोल श्री धन्वन्तरि भगवान की जय. Then in the story, all the Rakshasas take it, they run. Devatas cry. Every time when they cry, they remember Narayana.
आ जाते भगवान, भैया कुछ करो, then he takes मोहिनी अवतार and all that. He gives amrita to devata. ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भान्ति कुतो तमेव भाति नारायणाय विद्महे नमो ब्रह्म व्यास योगींद्राय नमस्तस्मै शुक ब्रह्मणमये व्यास ओम बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, कुमार चंद्र चूड़, रामायण महाभारत भागवत उपनिषद ब्रह्मसूत्र योग पातदेव शिवपुराण संस्थानाथ शास्त्र श्री वेदव्यास सुखदेव सूताद भागवताच वेदव्यास वेदव्यास हिशमनि आज्ञवल्काच ब्रह्म विद्या श्री हिरण्यगर्भ कपिल पतंजलि व्यास योग दर्शनाचार्य धन्वंतरि भगवान। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज के आनंद के नाम पार्वती धर्मा सर्वत्र गोविंद नाम जानकी जय, जय राम अम्बे माँ आदि वराक्त बाला त्रिपुर माता की जय। श्री महिषासुरमर्दिनी माता की जय। समस्त श्रोता भक्त साधक सेवक उपासक जिज्ञासु धर्म संस्थापक मंडल की जय। आज के आनंद की जय। थैंक यू। Our class will be there tomorrow as usual, all of them. If wanted, थोड़ा टाइम कम करेंगे कल और परसों. But you know, for us, through study of Shastra, reminding ourselves about the truth, reality, Brahma alone is real festival celebration. Other cultural, traditional way, that anyway you do the time other than this class. Thank you. Mhm.